All right, so in the last session, we talked about transformations of these graphs. Sine, cos, tan के graphs की जो transformations होती हैं, हमने ये देखी थी. Amplitude और period की बात की थी उससे पहले. Amplitude is the distance, the maximum distance of the graph from the baseline. And period is the interval on the x-axis in which the graph completes one full cycle, right? ये हमने देखा. We looked at vertical transformations first. Vertical transformations क्या होती हैं? In which the y coordinates change. Vertically graph किसी तरह से change होता है. Now, when do you have vertical transformations? When something happens outside the function. Sin, cos के बाहर आप किसी चीज से multiply करते हो या plus minus करते हो, उससे vertical transformation होती है. Graph vertically move करता है. If you multiply by the minus sign, there's reflection. If you multiply by another number, stretch होता है graph. Vertical transformation के केस में उससे amplitude change हो जाता है. और अगर plus minus करते हैं, graph shift हो जाता है, translate हो जाता है, upwards or downwards. Okay. Then we looked at horizontal transformations. In horizontal transformations, only the x coordinate changes. So the graph changes its shape horizontally. Horizontally कुछ ना कुछ change होता है. ये कब होती है? जब फंक्शन के अंदर कुछ हो रहा होता है. You replace x with something else. अगर आप x के साथ कोई चीज मल्टीप्लाई कर दो या माइनस से मल्टीप्लाई कर दो या कोई चीज प्लस या माइनस कर दो, that is when horizontal transformations happen. Multiplying by the negative sign inside the function, x को अगर आप माइनस से मल्टीप्लाई करोगे, रिफ्लेक्शन होगी. But this is horizontal reflection, यानी कि y axis में रिफ्लेक्ट होगा. तो ग्राफ अगर राइट पे था जो पार्ट पे लेफ्ट पे चला जाएगा, लेफ्ट वाला पार्ट राइट पे चला जाएगा. If you multiply by a number, this is horizontal stretch. इससे आपके trigonometric graph के period में पे effect होता है. Period को क्या होता है? If you multiply by a number, period gets divided by that number. Okay, so if you have 2 times x, जो भी आपका पहले period था, वो 2 से divide हो जाएगा. Is that okay? ये देखा हमने. फिर plus minus. अगर आप प्लस माइनस करते हो, उससे ट्रांसलेशन होती है. ग्राफ मूव्स हॉरिजॉन्टली आइदर राइट और लेफ्ट, बट इट वर्क्स अ बिट काउंटर इंट्यूटिव. आप जब प्लस करते हो तो ग्राफ लेफ्ट पे जाता है, और जब माइनस करते हो ग्राफ राइट पे जाता है. वी लुक्ड एट द रीजनिंग फॉर दैट यस्टरडे एज वेल. अब ये सारी ट्रांसफॉर्मेशंस आपको याद रखनी है, ठीक है? याद रखनी है. आपको लॉजिक समझ आई है नहीं आई है? Eventually, you need to memorize all of these 6 cases. Vertical transformation में क्या हो रहा होता है और horizontal transformation में क्या हो रहा है. You have to remember these 6 transformations. Okay? So this is what we did in the last session. Now we are just going to focus on doing some more practice questions. So we will start with your questions first. If there were any problems, specifically the problems that have graphs involved, उससे start करेंगे. उसके बाद फिर अगर आपको कोई और problems है वो भी discuss करता है. ग्राफ रिलेटेड कोई क्वेश्चन है किसी का, या अभी प्रैक्टिस नहीं किया उसकी? यस है ना? ओके, लेट्स लुक एट 28. क्वेश्चन नंबर, ओके, दिस इज अनदर वर्कशीट. Question number 28 from the worksheet. Let's try this. All right, so we need to sketch this graph. Sketch on a single diagram 2 graphs, in fact. One is y equals cos 2 theta, and the other is y equals 1 over 2. ये दो ग्राफ्स हैं, आपने दोनों एक ही डायग्राम के ऊपर स्केच करना है. We are given the interval is from 0 to 2 pi. Let's start with the first part of this. 0 to 2 pi है, तो x axis पे you don't really have to go on to the negative side. उसको हम erase कर देते हैं यहाँ से. We only want positive numbers. So this is the y-axis, this is the x-axis. We're starting from 0. And you have to go until 2 pi. It's in radians, keep that in mind. In the middle here, you'll have pi, you have
pi over 2 here and 3 pi over 2. Now, when you're drawing graphs, there are two ways of thinking about this. One is going to be slightly quicker, but it's going to require some thinking. And the other is going to be slightly longer, लेकिन उसमें भी सोचना नहीं पड़ेगा, बस directly आप ग्राफ बना दिया करेंगे, उसमें थोड़ा सा टाइम ज़्यादा लग सकता है. Let me do this problem both ways. Here we can decide which one we prefer after that. So first of all, we want to draw the graph of y equals cos 2 theta. ये graph draw करना. One way to think about this is that you draw the graph of cos theta first. Cos theta का graph कैसा होता है? We should know that shape. Cos sine के graphs आपको अब याद होने चाहिए. So these are the graphs that we have. This is how the sine graph looks like. 0, 1, 0, minus 1, 0. That's how it goes. Okay? इस तरह से ग्राफ है. ये cos की शेप है, ये 1 से स्टार्ट होता है, फिर 0 पे, फिर minus 1 पे, फिर 0 पे, फिर 1 पे वापस. This is how the shape of the cos graph looks like. And then we have tan. It's a broken graph like this. 90 or 270 पे undefined है, दरम्यान में it looks like this. ये तीन जो basic graphs हैं, ये आपको पता होनी चाहिए इनके shapes. Okay? Now, think about this. Cos का graph कैसा होएगा? Where does it start from? It starts from 1. 1 से start होएगा. 90 degrees is pi over 2. तो ये basically 1 से start होके इसका पहला point इधर होता है. This is one point. At 0, we've got 1. At pi over 2, we'll have 0. At pi, we'll have minus 1. 3 pi over 2 will have 0 again. And at 2 pi, it will be 1. So the shape of the graph is going to look something like this. This is how the cos graph looks like. Is that okay? Now, this is not cos, this is cos of 2 theta. Now you need to think about what happens when you do this transformation. Cos of 2 theta. सबसे पहले ये function के बाहर कुछ हो रहा है, function के अंदर कुछ हो रहा है. Function के अंदर, right? Theta को आपने 2 से multiply कर दिया. Is it horizontal transformation or vertical transformation? It's horizontal. Okay? Horizontally कुछ change आएगा. Multiply करने से क्या होता था? इससे किस पे effect होएगा? Period. 2 से multiply किया, period आपका half हो जाएगा. Period half हो जाएगा. This is what we did here. A से multiply किया, तो period is divided by A. Whatever it originally was, that is divided by A. Cos का period होता है 360. 360 को आप उस number से divide कर दोगे. In this case, cos का period 2 pi है radians में. उसको 2 से divide किया, pi period हो जाएगा. तो पूरा graph किस interval में अब complete हो जाना चाहिए? Pi में. So when you draw this graph, इसके 2 cycles अब बन जाएंगे. You'll have one cycle like this. One cycle like this, and then you'll have another cycle after that. Which is going to look like this. This is the graph of cos 2 theta. And then you can erase the original graph. वो बस आपने सिर्फ इसको सोचने के लिए बनाया था. ये आपने remove कर दिया. This is the graph of cos of 2 theta. Does that make sense? So you think of cos graph, and then you see what transformation is happening on that. आप 2 से multiply करो, तो transformation क्या हो रही है? Period half हो गया, तो अब 2 cycles complete होंगे इसी interval के अंदर. All right? That's one graph. The other graph that you have here is y equals 1 over 2. वो तो आपको पता है वो क्या होता है? Y equals 1 over 2. That's a straight line. और इस तरह की lines जो है, they are horizontal. 1 over 2 के ऊपर you're just going to have a horizontal line. So this is point 1 over 2. At this point, you draw a horizontal line that looks like this.
This is the graph of y equals 1 over 2, and the other one is y equals cos of 2 theta. Make sense? Any problems with this? This is one way to look at these graphs कि आप base graph देखें, sine का, cos का, tan का, whatever that is. In this case it was cos. And then you think कि उस पे कौन सी transformation हो रही है. यहाँ पे period उसका half हो गया है. So उसके हिसाब से अभी graph बना दो. Okay, you can think of it mentally as well. आपको cos का बनाना जरूरी नहीं है, बस आप cos का सोच लें, इस तरह का ग्राफ होएगा. अब 2 से multiply हो गया तो 2 cycles उसके आ जाएंगे. All right, this is one way to think about this. One way to do this. आप transformations का सोच के ऐसे कर सकते हैं. Okay. The other idea is that you do it like you used to do in O levels. O levels में graphs कैसे draw करते थे? Table बनाते थे, values लेते थे, values plot करते थे और उनको join कर देते थे. Now that does not require any thinking as such. बस values डालनी है, plot करना है. एक बस आपको चीज याद रखनी है, जनरल शेप कैसे होती है ग्राफ की, दैट यू शुड रिमेंबर, ताकि आप कुछ पॉइंट्स लें तो आपको पता चल जाए इसका शेप इसके इस तरह से बनेगी. So you should remember what the sine shape looks like. You should remember what the cos shape looks like. तो जब आप शेप बना रहे हो, you should know कि अच्छा इसे कर्व किस तरह से बनानी है. तो आप 5-6 पॉइंट्स लेंगे और आपकी वो शेप बन जाएगी. Is that okay? Now, how are you going to do that? It's going to take a lot of time if you were to make that whole table here. तो हम क्या करेंगे? टेबल फंक्शन यूज करेंगे कैलकुलेटर के ऊपर. ओके, दिस इज व्हाट यू डू. आप y इक्वल्स cos ऑफ 2 थीटा, थीटा की जगह x डाल दें कैलकुलेटर में, थीटा का शायद नहीं कोई लेटर होगा उसके ऊपर. राइट दिस फंक्शन, राइट डाउन दिस फंक्शन ऑन योर कैलकुलेटर. पहले तो टेबल फंक्शन में जाए. इनफैक्ट टेबल फंक्शन ढूंढे, उसमें आपने क्या करना है, f ऑफ x इक्वल्स cos ऑफ 2x इनपुट कर देना है. f of x equals cos of 2x. Done? Now you have the option of start after that. You have to start from 0, then end at 2 pi. That's pretty obvious. Start at 0, end at 2 pi. Calculator mode radian में होना चाहिए, otherwise सही आपके आंसर्स नहीं आएंगे. Calculator mode check कर लेना. It should be radians. Okay. Now we need to think about step. Step में you need to have enough values कि आपको shape पता चल जाए उससे. Okay. Now it really depends on कि आपको shape कितनी अच्छी जो है वो याद है. तो अगर आपको exact shape का पता है कि इस तरह का ग्राफ बनेगा, आप कम पॉइंट से भी कर सकते हैं. तो you could maybe get away with an interval of pi over 2. Pi over 2 का interval लेंगे तो क्या होएगा, आपको ये values मिल जाएंगी. You get 1 point here, then 1 point here, then 1 point here, and then this and this. If you remember the shape, you would be able to figure out कि अच्छा ये cos का ग्राफ 2 दफा complete हो रहा है यहाँ पे, फिर आप उस तरह का ग्राफ बना देंगे. That's one idea. But if you want to be safer, if you don't want to think at all, आपने बस plot करने और ग्राफ बना देने, तो आप यहाँ पे स्टेप जो है थोड़ा सा और कम कर दें. pi over 2 के बजाय try pi over 4. pi over 4 डाल दें. And then you'll get all of those points. आपको ये सारे points मिल जाएंगे. You get this point here, this point, this, and then these should be enough to draw this graph. Of course, shape का पता होना फिर भी थोड़ा सा जरूरी होगा, otherwise आपको even इससे ज्यादा points लेने पड़ेंगे. अगर आपको ये point पता चले कि यार cos की shape आपको हल्की से भी याद है, you should be able to draw this graph from that. Is that okay? But यहाँ पे अब आपको थोड़ा सा देखना है कि जब आप टेबल में वैल्यूज देखेंगे आप थोड़ा सा कंफ्यूज हो सकते हैं, बिकॉज जब आप पाई ओवर 2 का अपना इंटरवल डाले, पाई ओवर 4 का इंटरवल डाले, वो करता क्या टेबल, पाई की टर्म्स में अनफॉर्चुनेटली उसको नहीं रखता, उसको डेसिमल्स में कन्वर्ट कर देता. सो इफ यू लुक एट द टेबल, एक्स वैल्यूज सारी उसने डेसिमल्स में कन्वर्ट कर दी होंगी. डोंट वरी अबाउट दैट, यू शुड जस्ट नो कि एक्स वैल्यूज क्या आ रही हैं. आपको पता है पाई ओवर 4 का इंटरवल ले रहे हैं, तो फर्स्ट वैल्यू 0 पे होगी, फिर पाई ओवर 4 पे होगी, फिर नेक्स्ट पाई ओवर 2 पे होगी. तो पाई ओवर 4 के इंटरवल्स पे वैल्यूज आते जाएंगी. तो आपने एक्स की वैल्यूज
पे फोकस नहीं करना, फोकस करना है y की वैल्यूज पे, कि इतने इंटरवल पे y की कौन कौन सी वैल्यू आ रही है. So the first value that you'll get for y is 1, then the next value would be 0, then -1, then 0, 1, and then that will be repeated again. तो आपने बस y वैल्यूज वो इतने इंटरवल से प्लॉट करते जाना है, ठीक है, और फिर आपका ग्राफ बन जाएगा. दिस इज एन easier way of doing this. आप टेबल बनाएं, प्लॉट करें, उनको ज्वाइन कर दें. ये क्लियर है सबको? दैट वाज अ 3 मार्क क्वेश्चन. आपको ये करना था, दोनों ग्राफ स्केच करना था. Let's look at the second part. Now, the second part says write down the number of roots of this equation. Number 2. 2 cos 2 theta. 2 cos 2 theta minus 1. That equals 0. इसके नंबर ऑफ रूट्स आपको बताने हैं किस इंटरवल में? 0 to 2 pi. Zero to 2 pi में इस इक्वेशन के कितने रूट्स हैं? Now remember your O-level topic, graphs of functions. It's very similar to that. आपने 2 ग्राफ्स बना लिए हैं, आपको इक्वेशन सॉल्व करनी है based on that graph. What you need to do is you need to convert this equation to a form such that on one side you have this graph और दूसरी साइड पे किस तरह से दूसरे ग्राफ का कुछ पार्ट आ जाए. ओके, अब ये तो डायरेक्टली आपके पास इस तरह से हो सकता है. इक्वेशन आपके पास क्या है? 2 cos 2 theta minus 1 equals 0. There are 2 graphs that you've drawn in the first part. One was cos 2 theta and the other is 1 over 2. Now, can you rearrange this graph somehow that you have only cos 2 theta on one side? This equation that you have only cos 2 theta on one side, अगर आप cos 2 theta को subject बना लें, 1 goes to the other side, that becomes 1, and then you divide by 2, you get 1 over 2 here. So this equation is converted to cos of 2 theta equals 1 over 2. And these are exactly the 2 functions that you have drawn there. एक फंक्शन आपने ये बनाया था, एक ग्राफ ये बनाया था y equals cos 2 theta, और दूसरा ग्राफ आपने बनाया था y equals 1 over 2. यही 2 ग्राफ्स आपने वहां पे बनाए हैं. So this equation is asking for when these 2 functions are equal to each other. So graphically, what that means is where are the points of intersection of these 2 graphs. Okay, आपने स्केच किया है तो स्केच में आपसे वो कभी वैल्यूज नहीं पूछेगा. स्केच में आप एग्जैक्ट वैल्यूज तो नहीं निकाल सकते, तो आंसर नहीं निकाल सकते एग्जैक्ट. इसने सिर्फ आपसे पूछा राइट डाउन द नंबर ऑफ रूट्स, कितने आपके सॉल्यूशंस आ रहे हैं. दैट यू कैन फिगर आउट फ्रॉम दिस ग्राफ. यू कैन सी हाउ मेनी रूट्स यू हैव गॉट फॉर दिस इक्वेशन. पॉइंट्स ऑफ इंटरसेक्शन देख लें कितने आ रहे हैं. 1, 2, 3 and 4. You've got 4 points of intersection of these 2 graphs. So you say the number of roots that you've got in this interval is equal to 4. That's the number of roots. It's 4. Make sense? Any problems? तो आपको इक्वेशन दी होगी, आपको उसको रीअरेंज करना होगा पहले इन सच अ वे कि एक साइड पे एटलीस्ट आपके पास वो फंक्शन आ जाए जो आपने ड्रॉ किया हुआ है. फिर आप दूसरी साइड का सोचोगे बेस्ड ऑन दैट. यहाँ पे तो 2 फंक्शंस आपने ड्रॉ किए थे, तो एक साइड पे cos 2 थीटा आ गया, दूसरी साइड पे 1 over 2 आ गया. एग्जैक्टली वही दोनों फंक्शंस आ गए. आपने डायरेक्टली उनके पॉइंट्स ऑफ इंटरसेक्शन देख लिया. लेट्स लुक एट द लास्ट पार्ट. नाउ they're asking us to solve the same equation, find the number of roots of the same equation, but the only difference is that the interval is different now. Interval is from 10 pi to 20 pi. पहले क्या था? 0 to 2 pi. Now it's 10 pi to 20 pi. Okay. How do you think about this now? Yes, Fatima? By 5? Why?
Yes, so that's good. Remember, the graph is cyclic. This graph is cyclic. 0 से 2 पाई पे जिस तरह का ग्राफ लग रहा है अभी, it's just going to repeat itself like this on the right side and also on the left side. Same graph repeat होता जाएगा. Okay? और straight line तो वो तो of course straight ही रहेगी, तो वो भी उसी तरह से रहेगी. तो exactly same graph आपका हर 2 पाई इंटरवल में repeat होता जा रहा है. अब 2 पाई के इंटरवल में how many solutions are you getting? You're getting 4 solutions. 0 to 2 pi, you're getting 4 solutions. अब उसने क्या कहा, इंटरवल इज फ्रॉम 10 पाई टू 20 पाई. सो ये सी कि वो कितना गैप बन रहा है, दैट्स गैप ऑफ 10 पाई. तो वो 10 पाई के इंटरवल में आपके कितने रूट्स आएंगे? अगर 2 पाई में 4 रूट्स आ रहे हैं तो 10 पाई में जस्ट यूजिंग रेशियो यू शुड बी गेटिंग 4 मल्टीप्लाइड बाय 5, 20 रूट्स. Is that okay? So from 0 to 2 pi, you're getting 4 roots. From 10 to 20 pi, you should be getting 4 times 5, and that is 20 roots. It's because of the gap. The gap was earlier 2 pi, and this it's 10 pi. तो वो gap 5 से multiply हो गया, तो number of solutions भी आपके 5 से multiply हो जाएंगे. ठीक है? All right. Any other questions? Graph वाला एक और question, उसके बाद हम दूसरे questions करते हैं उसके बाद. Any other graph question? अच्छा, थोड़ा सा मिस प्रिंट हुआ हुआ है यहाँ पे. क्वेश्चन नंबर 15 में ना 2 क्वेश्चंस ओवरलैप कर रहे हैं. लेट्स लुक एट दिस क्वेश्चन दैट हैज ग्राफ्स इन इट. ग्राफ वाला देखते हैं. I'll just get rid of the rest of it. क्वेश्चन नंबर 15 में जो ग्राफ वाला पार्ट है वो कह रहे हैं. अच्छा, this is how it actually looks like. Okay, you have a point 3 given. जो ऊपर एक point है ना, that's 9. All right, you have a graph given like this. Now it says the diagram shows the graph of y equals a sine of bx plus c. ये ग्राफ आपके पास given है. We need to find the values of a, b and c. Now I need to use transformations here. A, B और C की values कैसे आएंगे? Remember, what does this number A represent? Amplitude. बाहर multiplication जो हो रही है, it's a vertical transformation. Multiply करते हैं तो stretch होता है graph. इस case में the number A basically represents the amplitude of the graph. What's the amplitude of this graph? 6. Right? ये दरम्यान में baseline है. This is the baseline. Baseline's in maximum distance. It's 6 units here, 6 units here.
Amplitude is 6, so we say the value of A should be equal to 6. A equals 6, that's the amplitude. तो वो तो आपके पास डायरेक्टली आ गया. Now, what about B and C? Let's start from C, for instance. How do you find the value of C? Point of intersection. C क्या represent कर रहा होता था? कौन सी ट्रांसफॉर्मेशन है? वर्टिकल, हॉरिजॉन्टल? वर्टिकल, फंक्शन के बाहर कुछ हो रहा है, साइन के बाहर कुछ हो रहा है, इट्स वर्टिकल. Which one of the three? ट्रांसलेशन. ट्रांसलेशन का मतलब है ग्राफ वर्टिकली ऊपर नीचे मूव कर रहा है. ग्राफ जो ओरिजिनल ग्राफ था आपका, ओरिजिनल साइन ग्राफ, वो कितना मूव कर गया? बेस लाइन आपकी पहले कहाँ होती है? 0 पे होती है. वेयर इज दिस नाउ? वेयर इज इट नाउ? 3. So your graph has moved up by 3 units. Okay, 3 units ऊपर move कर गया graph. So the value of C therefore should be 3. C की value आपके पास 3 होगी. Baseline has gone from 0 to 3. Baseline ऊपर चले गए. मतलब पूरा ग्राफ जो है वो आपका मूव कर गया, ग्राफ शिफ्ट कर गया, ट्रांसलेट कर गया. Okay. What about B now? B. B क्या represent करता है? Is it horizontal transformation or vertical transformation? It's horizontal. Stretch, और इसमें किस पे इफेक्ट होता था? पीरियड पे इफेक्ट होता था. पीरियड आपका ओरिजिनली क्या होता है साइन का? 2 पाई. इसको क्या हो गया यहाँ पे? पीरियड को हाफ हो गया. पीरियड हाफ हो गया, तो फिर बी की वैल्यू क्या होनी चाहिए? 2 होनी चाहिए. 2 से मल्टीप्लाई वहां पे करना होगा. तो B is equal to 2. You can also think of it in terms of frequency. आपका पहले 2 पाई में 1 साइकिल कंप्लीट होता था, अब 2 पाई में कितने साइकिल्स कंप्लीट हो रहे हैं? 2 साइकिल्स. द वैल्यू ऑफ B should be 2 there. उतने ही इंटरवल में अब आपके 2 साइकिल्स कंप्लीट हो रहे हैं, तो उसकी वैल्यू 2 होगी वहां पे. मेक सेंस? So I could write it like this. Your period was 2 pi earlier. No. Original period divided by B equals this new period, which is pi. So the value of B turns out to be 2 here. Okay. The new period आपका, that's original divided by B. If you just make an equation like this, you can find the value of B from this as well. Any problems? No? Now the second part says, find the smallest value of x in the interval 0 to 2 pi for which y equals 0. They are just asking you to solve this equation, basically, and find the smallest value of x that you get from this in this interval. Let's do that. We have y equals a sine of bx plus c. That's the function. Now we know the values of a, b, and c. A is 6, and you have 2x plus 3. This is what you've got here. Okay. This is the function. Y की जगह पे 0 डाल दें. For y equals 0, 0 equals 6 sine 2x plus 3. You get 6 sine 2x equals minus 3. Sine 2x equals minus 1 over 2. How do you solve this equation now? Basic angle find कर लें. Sine alpha equals 1 over 2. Alpha equals, remember what the interval was? Interval is from 0 to 2 pi.
आपको यहाँ पे रेंज वगैरह एडजस्ट करने की जरूरत भी नहीं है। आज सच आपको स्मॉलेस्ट वैल्यू चाहिए ना, सबको एक ही आंसर चाहिए जो सबसे छोटा आंसर है। अगर आप करना चाहते हैं तो वो कर सकते हैं। तो रिमेंबर उसके लिए हम क्या करते थे, we would first change it to another variable. We would say a equals 2x, and then that is going to give us sine of a equals minus 1 over 2. Then you find the basic angle. Basic angle in this case turns out to be pi over 6. Interval a का क्या होएगा, a is 2x. तो अगर हम यहाँ पे 0 input कर दें उसकी जगह पे, we get 0. 2 pi input करें, we get 4 pi. So we need answers within 0 and 4 pi. But at the end of the day, we're just looking for the smallest value. सबसे छोटी वैल्यू चाहिए। साइन नेगेटिव है, साइन नेगेटिव कहाँ पर होता है, थर्ड एंड फोर्थ। You've got one value here and one value here. What's the first answer that you get here? It's 2 pi, sorry, pi plus pi over 6, and that is 7 pi over 6. This is the smallest answer that you're getting. आपको बाकी नहीं चाहिए, आपको सिर्फ smallest value चाहिए। ठीक है, दिस इज द वैल्यू ऑफ a। अब वापस x कैसे आएगा, you replace it with 2x. 2x equals 7 pi over 6 and x equals 7 pi over 12. This is the smallest value of x that we were looking for. Is that all right? अगर आपको बाकी फाइंड करनी होती तो आप कर सकते थे। फोर्थ क्वाड्रेंट वाली वैल्यू भी आती है, फिर आप एक सर्कल पूरा घूम के दोबारा से आते हैं, बिकॉज योर इंटरवल फॉर ए इज अंटिल 4 पाई। तो अगर आपको सारी फाइंड करनी होती, यू वुड हैव गॉट 4 आंसर्स फॉर दैट। ओके, 4 आंसर्स आते हैं, एक दफा थर्ड क्वाड्रेंट में, फिर फोर्थ क्वाड्रेंट में, और फिर एक दफा दोबारा फुल सर्कल घूम के दोबारा इन दोनों क्वाड्रेंट में आपके 2 वैल्यूज आती हैं। तो टोटल 4 आंसर्स आते हैं आपके, एंड दे वुड हैव बीन these 4 points of intersection that this graph has with the x-axis, this, 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 and this. वो ये चारों values आती हैं। But for now we have just found this value. ये आपके पास आ गया। ठीक है, उसने smallest पूछा था सर, हमने smallest find कर लिया। Any questions on this? No? Let's have a 2-minute break, and then we do a couple of more questions that do not involve graphs. वो एक दो कर लेते हैं जो आपके पीछे से problems है, and then we'll see if you have any more questions on Monday or Tuesday. हम वो शुरू में discuss कर लेंगे. Otherwise, if you don't have any questions, I'm going to move on to the next topic. Okay? Change the Friday class. Shift करने का नहीं कहा था, हमने decide किया था कि we would have an extra class. That's what we decided. Extra class होगी, वो उसका time I'm not sure what it was. 10, एक तो Saturday class extend होनी थी 10:30. Sorry, जून में कर लेते हैं। How many of you want classes in June? So you want your summer break to be reduced by 2 weeks. 5 classes हो जाएंगे ना, अभी 4 होती हैं तो एक और हो जाएगी। The other option is we come back in June for 2 weeks. आपकी summer break जो है 2 months के बजाय 1.5 months हो जाएगी। हाँ, sorry, हाँ एक क्लास के लिए आना है। We'll have consecutive classes for 2 weeks, 5 days a week, or maybe 6 days a week. Yes. एक क्लास के लिए आना होगा, yes. Online नहीं होगा, in person. Online नहीं हो सकता। How many of you want classes in June and not have an extra class instead of that? Okay. Fatima or okay, now we have 4.
Yes, we have only 4 people who want that. आप लोगों के लिए जून में क्लासेस कर लेंगे, लेकिन एक्स्ट्रा क्लासेस तो होंगी फिर भी. Yes. Okay, let's do a couple of more questions quickly. अब मुझे बताएं ग्राफ के अलावा जो पहले वाले क्वेश्चन थे. मजा 34. Let's start with 34 then. Second part of this only? First part of it. Second part तो उसी तरह का जब भी हमने किया है. All right, let's try this. This is question number 34 from the worksheet. Sine 2x plus 3 cos 2x. This equals 0. We need to solve this for x between 0 and 360. Now remember what we used to do whenever we had something other than x here, we would use a substitution, replace this thing with another letter. Okay? You could do that right now, या फिर end पे जब आप इसको किसी और फॉर्म में कन्वर्ट कर लें उसके बाद कर लें. That's your choice, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता. Let's do the substitution right now, क्योंकि एंगल आपका 2x है, यहाँ पे x नहीं है और आपको इंटरवल x का दिया हुआ है. तो आपको सबसे पहले क्या करना है, you use a substitution and say let a equals 2x. All right, what's the interval of a now? You input 0 in this, that gives you 0. You input 360 in this, and that gives you 720. So the interval that you have for a is going to be from 0 to 720. And now you solve this equation instead, which is sine a plus 3 cos a equals 0. And find the values of a from this. How do you solve this equation now? You have two functions, sine and cos. You need to convert it to one single function first. क्या कर सकते हैं?
क्या कर सकते हैं? We could take cos to the other side and then divide there, वो tan में convert हो जाएगा. That's one possibility. हम directly यहाँ पे पूरे equation को cos से divide कर दें. If we divide the whole thing by cos, what are we left with? Tan A plus 3 equals 0. Is that okay? Cos से क्यों divide किया? Tan में convert करने के लिए. So that's one idea as well. We can also do that. Now we have tan of A equals minus 3. Find the basic angle. Tan alpha equals 3. What's the basic angle? 71.57. This is the basic angle. Now we draw quadrants. Tan is negative. Where is tan negative? Second and fourth. ASTC first और third में positive होता है, बाकी दोनों में negative होएगा. This is 71.57 here and 71.57 here. So what are the values of A now? A equals this angle, which is 180 minus 71.57, or A equals 360 minus 71.57. What are these values? ये क्या आती हैं? 108.43 and 288.43. But now you need to be careful. What's the interval for A? It's going from 0 to 720. ये 360 से ऊपर भी जा रहा है. So what you do now is you go one full circle and come back to these lines again. 360 से बड़े angles भी हो सकते हैं. ये दो values तो आपके पास आ गई. Let's find other values. Let me write them on the side here. You complete one full circle and then come back to this point again. Directly आप ये भी कर सकते हैं. 108.43 जो था, ये तो आपको पता है 108.43 है. इस पूरे में 360 ऐड कर दें, you'll get the next value. Okay, what's that? 108.43 plus 360? 468.43 degrees. You could have another value, and that's this line when we complete one full circle and come back to it again. So that's 288.43 जो हमें पहले मिल रहा था, plus 360. What's that? 648.43. These are four values of A that we're getting here. Okay. Now we were not looking for values of A. We were actually looking for values of X. A was equal to 2X. वो वापस input कर दें यहाँ पे और देख लें X के क्या values आती हैं. 2X equals 108.43. X equals 54.2 degrees. That's one answer. 2X equals 288.43. X equals 144.2 degrees. That's the second answer. Then 2x equals 468.43. X equals 234.2 from here. And then you have 2x equal to this. X equals 324.2 degrees from here. These are the four values of X that we get from this. Four answers are here. Is that okay? Any questions? Look at the second part. Now it says, how many solutions does the same equation have for x between 0 and 1080? What do you think? Multiply by 3. 0 से 360 में कितने solutions आ रहे हैं? 4. So 0 to 1080, that's 3 times this interval. तो उसका आप 3 से multiply कर दें. That's just 4 times 3.
and that's 12 solutions. Using the same logic that we used in the last question, 360 के इंटरवल में 4 solutions हैं, 1080 के इंटरवल में 3 times that हो जाएंगे. Is that okay? Okay, let's do one more question very quickly. एक और था किसी का. Yes, Sabina. 44. Let's look at that. ये हमने किया नहीं है question. You've done this before. 44 part 2. इस पे कहाँ पे issue है? We did this on Saturday. Sorry? Okay. This is what we have. Sine of 2 theta plus pi over 3, that equals 1 over 2. How do we start? We replace that whole thing by using substitution. उस पूरे को a से replace कर दिया. अब वो interval adjust हो जाएगा. इसमें theta की value 0 input करें, you get pi over 3. Theta की value pi input करें, you get 7 pi over 3. That's the range. अब उस range में आपने इसको solve कर लेना है. End पे जाके a की जगह पे वापस ये डाल देना है और theta के values आ जाएंगे. You get 2 answers from this. Okay? ये हमने किया हुआ पहले. Okay, that's it then. If you have any more questions, we can discuss them on Tuesday. If you don't have any questions, we can just move on P3 trigonometry then. All right. Okay, let me mark your attendance.